Good morning, team. ATM has reported disbursement numbers where 7,313 crores has been disbursed. They talk about a growth of 482%, and the total transaction done for this quarter is higher by 39% at 7 crore 97 lakh. GMDC, Gujarat Mineral Development Corporation, Gujarat government company. It has said, it has commenced geological studies on ground design for mineral exploration program for over 1,400 hectares in around Ambanji mining lease in northeast Gujarat. They say if this happens, it will help GMDC reduce copper imports. So it is very positive for GMDC. Already they are talking about rare earth, now about copper, which has very high margins. Tata Steel provisional numbers. Indian production is flat while delivery is the highest we have seen in recent times. So I think steel stock can recover from lower level. Sale also increases flat steel prices by 1,500 per ton for October sales. Now, so I think early October sales, so that is also positive. Star Health and Allied Insurance Company, the insurance company reported 21% increase on gross direct premium for health category. But group segment saw a 49% decline, but group is very small percentage of Star Health. Whereas their personal accident insurance has seen a growth of 25%. And we need to understand, Star Health due to COVID claims saw losses, but now COVID is behind us. So there is a recovery seen in this stocks. Titan also has said it aims to gain 10% market share in jewelry business in next 3 to 4 years. Currently, it has a market share of 6%. Varroc Engineers had a presentation and con call for the cut in valuation for the deal. So previously, they were about to sell their four-wheeler lighting business at 600 euro. Now they have reduced to 520 euro. It is not only that they will also take 51 million euro as a compensation for IPR infringement litigation. So the cut is more than 20% from the previous level. So previously after the deal, the debt would have been zero. Now after the deal, the revised deal, the debt will be 1,300 crores. Very negative for Varroc Engineers. Direct tax collection is higher by 24% at 8,98,000 crores till 8th October, says Finance Ministry. In provisional number update, Bandhan Bank deposit has 21% growth at 99,365 crores, and the loan also has seen 22% growth at 98,000 crores. And the collection efficiency is also at 97%. It is better than previous quarter. Kalyan Jewellers revenue growth, they said it is 20% in Q2 FY23, and India standalone growth is 14%. Suzlon, an update on Suzlon. Sun Pharma promoter who is having some stake in Suzlon already, he has agreed to subscribe to the rights issue fully, and he is also willing to subscribe to additional issues also. Ajmara Realty came with Q2 FY23 numbers. Sales was higher by 82% at 166 crores. Volume also was higher by 49% at 79,976 square feet. So collection slightly decreased by 6% for them. Tata Motor JLR Q2 FY23 sales was higher by 12%. So the JLR number on face of it looks very good. So I think that will be positive for Tata Motors, even for Bharat Forge.
IGL has hiked PNG and CNG price in Delhi by 3 each, but still, this will have an impact because now petrol vehicle and the CNG, PNG vehicle, the differential is very less. So the break even will take 3 years. So that means people will not convert to CNG, PNG if there is no very light running. They are not using the vehicle on a regular basis. They will not go in for it. Sterlite Technology, I said that they have partnered with Vocus project for Project Horizon in Western Australia. So the project size is $1 billion, in which these people will be partnering. What is the deal size? STL Tech has not informed. So with that, over to you, Brijesh. थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो पेटीएम के डिसबर्समेंट नंबर्स देखेंगे। डिसबर्समेंट में देखिएगा तो उन्होंने 7,313 करोड़ डिसबर्स किए हैं और ग्रोथ देखी जाए तो इसमें 42% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर में, और ट्रांजैक्शन भी देखी जाए तो 39% से ग्रो हुआ। टोटल 7.9 लाख करोड़ के आसपास का ये टोटल डिसबर्समेंट किए हुए। जीएमडीसी के लिए भी न्यूज है, उन्होंने जियोलॉजिकल माइनिंग एरिया है अंबाजी माइनिंग में, वहाँ पे वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये नॉर्थ ऑफ गुजरात में रहेगा। बेसिकली यहाँ से वो कॉपर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इससे उनकी जो कॉपर की इंपोर्ट्स जो कर रहे हैं वो थोड़ी रिड्यूस हो सकती है, और कॉपर में उनके पास वैसे भी बहुत अच्छा खासा मार्जिन है। तो जीएमडीसी के लिए बेटर न्यूज है। टाटा स्टील की भी प्रोविजनल नंबर देखिए, डोमेस्टिक्स में देखिए तो फ्लैट इधर, डिलीवरी में हमें जम देखा गया है। स्टील सेक्टर में ओवरऑल रिकवरी लोअर ही रहेगी, लोअर लेवल्स पे। स्टार हेल्थ के भी प्रोविजन नंबर है, नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। मतलब प्रोविजन रेशियो देखा जाए कोविड क्लेम्स क्योंकि अभी हट चुका है, तो 21% की ग्रॉस प्रीमियम पे हमें जम देखा है, और इनकी बट ग्रुप सेगमेंट में 49% का डाउनफॉल देखा। हालांकि ग्रुप सेगमेंट जो है वो की बहुत छोटा सा कंपोनेंट है इनकी टोटल बिजनेस के अंदर में, तो मेन इनका फोकस है वो सेक्टर रिटेल पे ही है। और अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी देखा जाए तो 25% के आसपास ग्रो होता है, सो वो भी एक अच्छा है। तो ओवरऑल कोविड की वजह से ये कम हो गया, तो ये स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए और यहाँ से ये अच्छा कर सकता है। टाइटन ने भी कहा है कि वो अगले 3 से 4 साल में 10% तक मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। अभी करेंटली इनकी 6% मार्केट शेयर है इस बिजनेस में। वैरॉक इंजीनियरिंग ने कहा है कि जो इनकी लाइटिंग बिजनेस है, पहले वो जो 600 यूरो में बेचना चाहते थे, अभी वो 520 यूरो पे कर दिया। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 20% तक इन्होंने लोअर कर दिया है, और इससे इनकी जो डेट है पहले जो जीरो हो रही थी अभी जीरो नहीं रहेगी, 1300 करोड़ का डेट बुक्स पे रहेगा। ओवरऑल की नेगेटिव न्यूज रह सकता है। और टैक्स के भी नंबर्स देखे गए हैं, 89.8 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन देखा गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये कहा गया है। बंधन बैंक के भी प्रोविजन नंबर देखा है, डिसबर्समेंट देखा है 91,365 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट है। कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी सी टीपर हुई 97% के आसपास में। कल्याण ज्वेलर्स के भी हमें प्रोविजन नंबर्स देखेंगे। रेवेन्यू देखा जाए तो 20% के आसपास से ग्रो हुआ है Q2 FY23 में, और इंडियन बिजनेस में देखा जाए तो 14% से हुआ है। सुजलॉन पे एक अपडेट है, दिलीप संघवी जी जो उसके अंदर एक सुजलॉन में इन्वेस्टर है, उन्होंने कहा कि वो इसके राइट्स इश्यू फुल्ली सब्सक्राइब करना चाहेंगे, और एडिशन जो भी रहेगा वो भी वे उसमें सब्सक्राइब करेंगे। अजमिना रियल्टी ने भी अपने प्रोविजनल नंबर्स दिए गए हैं, और 88% से उनका जो है वो सेल्स जंप किया गया। वॉल्यूम देखा जाए तो 49% से ग्रो हुई, जो कि 79,000 है। कलेक्शन एफिशिएंसी हमें बियरली थोड़ी सी डाउन देखी गई, 6% के आसपास में। टाटा मोटर्स की जीएलएस की भी सेल्स नंबर देखे गए हैं, जो देखा जाए तो सेल्स में 12% की ग्रो है, तो क्या पॉजिटिव है टाटा मोटर्स के लिए वैसे। और भारत फोर्ज के लिए भी पॉजिटिव है, जैसे हमने देखा क्लासिक ट्रक्स के भी नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे। आईजीएल ने पीएनजी और सीएनजी की प्राइस हाइक्स की है 3 रुपीज ईच के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और सीएनजी के अंदर कोई बहुत मोटा काटा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो इसकी वजह से जो पीपल जो शिफ्ट हो रहे थे जिनका यूजेस कम है, तो वो शिफ्टिंग कम होती हुई हमें इसमें देख सकती है। और डिफरेंशियल जो है वो पहले जो 3 से 4 साल था वो और बढ़ सकता है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ने कहा कि वो एक वोकस नाम की कंपनी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, उनके साथ पार्टनरशिप किए हैं, और $1 बिलियन का उनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज है टोटल इसके लिए। अभी हम देख रहे हैं आईटी, जैसे हमें रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है तो सारे सेक्टर्स की प्रीव्यू देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है जो अर्निंग्स है वो मिक्स सेट रह सकती है क्वार्टरली में। और हमें इसमें लग रहा है कि हिट्स ज्यादा रहेंगे मिसेस से ज्यादा। सेक्टर वाइज देखा जाए तो ऑटो, बैंक्स और एफएमसीजी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर सकती है।
और हमारे एस्टिमेट से वीकर नंबर जो है वो मेटल से आ सकते हैं, सीमेंट से आ सकते हैं। पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो कमोडिटी में हमें थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव रह सकता है ओवरऑल के लिए। और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी मेन इसके ऊपर फोकस करनी पड़ेगी। मैक्रो लेवल में देखा जाए तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जैसे जीएसटी कलेक्शन, पावर डिमांड और पीएमई भी अच्छी खासी हमें हेल्दी जो बोलते हैं रिकवरी देखी गई है। और निफ्टी की जो ईपीएस देख रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 846 की है। हम अभी बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखा जाए तो प्रोविजनल डेटा या क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही रोबस्ट सिक्वेंशियल बेसिस पे दिख रहा है। और बैंक्स ने जो है रेट्स भी इंक्रीज किए, सो पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं उनके मार्जिन पे आता हुआ। और हायर लिक्विडिटी के चलते बैलेंस शीट भी हमें लग रहा है Q1 FY23 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटर रहेगी जो कि Q2 FY23 में, जो कि इसको बेसिकली सपोर्ट करेगा निम से। सीमेंट्स में देखा जाए तो Q2 FY23 में EBITDA पर टन के हिसाब से अगर एक्सपेक्ट करें तो हमें सब्सटेंशियल क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन दिख सकता है। बेसिकली जो प्राइस रोल बैक्स हुए हैं और वो इनेबिलिटी जो कर रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जो कि हमें देख रहे हैं कि सितंबर मंथ में थोड़े से प्राइस हाइक्स हुए थे, बट तो भी वो हमें देख रहे हैं तो 3% डिक्लाइन के आसपास में ही है। कंस्ट्रक्शन स्पेस में देखा जाए तो एग्जीक्यूशन अगर Q2 FY23 में अच्छा देखा गया रोड कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स के लिए, बट उनके मार्जिन थोड़ी सी कमी दिखेंगे ईयर ऑन बेसिस से, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है रोड सेक्टर में। और अगर हम देख रहे हैं तो एक्सपेक्ट एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है 16% से ईयर ऑन ईयर, और एबिटा जंप हो सकती है 6% से ईयर ऑन ईयर। रेलवेज में देखा जाए तो रेवेन्यू अच्छे से ग्रो हो सकती है 17% ईयर ऑन ईयर पे, और एबिटा देखा जाए तो 12% से ग्रो होगी। मेटल एंड माइनिंग स्पेस में देखी जाए तो स्टील कंपनीज को Q2 FY23 में देख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हमें थोड़ा वीक दिख रहे हैं, क्योंकि जिसमें जो स्टीलाइजेशन से 7 से 12 हजार पर टन के हिसाब से हमें कॉस्ट रिड्यूस होते दिखा है। और एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से 17% का हमें डिक्लाइन दिखा है प्राइसेस फेल होते हुए। और कुकिंग कोल प्राइसेस में भी 46% का हमें राइज दिखा गया है, तो एक ये फैक्टर उसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं इनके रिजल्ट्स में। एफएमसीजी स्पेस में देखा जाए तो एफएमसीजी में लगता है रेवेन्यू ग्रो करेगा 18% के आसपास तक, या ईयर ऑन ईयर में 12% 3 ईयर CAGR के हिसाब से। बेसिकली वॉल्यूम ग्रोथ हमें सॉफ्ट ही दिख रहा है, बट ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिख सकता है, जो कि 100 से 190 बेसिस पॉइंट्स का है, जो कि 50% है। कंजम्पशन अर्बन इंडिया की आउट परफॉर्म करेगी रूरल के हिसाब से, बट इन्फ्लेशन चलते हुए इसमें थोड़ा सा पिकअप जो डिस्क्रिप्शनरी कैटेगरीज है उसमें थोड़ी सबड्यूड रहती हुई दिख सकती है। ऑयल एंड गैस स्पेस में भी देखा जाए तो पेट्रोकेमिकल के मार्जिन हमें थोड़े हायर दिख रहे हैं, और रिफाइनिंग और डीजल और इसके मार्जिन थोड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए दिख सकते हैं। सो ये कंपनीज हमारी जो कवरेज यूनिवर्स है वो की ऑयल एंड गैस। मिड कैप में भी हम देख रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द मिड कैप कंपनीज है वो कवरेज जो रिपोर्ट करेगी इंप्रूवमेंट दिख रही है टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर बेसिस में। Q2 FY23 में बेसिकली वॉल्यूम ग्रोथ चलते हैं और प्राइस हाइक्स के चलते हमें इनके रिजल्ट थोड़े बेटर दिख सकते हैं। और हम आगे लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि इसकी जो मार्जिन इंप्रूवमेंट और बेटर हो सकती है। कमोडिटी प्राइसेस जो गिरे हैं पिछले 3 महीने में, उसके इम्पैक्ट वो प्राइस हाइक्स को नहीं करेंगे और प्राइस कट्स में या उसके आसपास में ही रह सकते हैं। तो लगेज कंपनीज में देखा जाए वीआईपी एंड सफारी, और होटल कंपनीज में लेमन ट्री एंड चाइल्ड बेस्ट बेट्स है, इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें जो उसकी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट भी सेल्स दिख सकती है प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर में भी हमें लग रहा है कि कंटिन्यू ग्रोथ हो सकती है हेल्दी सेल्स की, और हायर एनर्जी कॉस्ट के चलते जो थोड़ा सा इनके मार्जिन पे हमें प्रेशर आते हुए दिख सकता है। आईटीबी एक न्यूज है कि इनकी जो डिस्क्रिप्शन केस चल रहे हैं, इन्होंने एक एम्प्लॉय ने फाइल किया इन्फोसिस के आगे। हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो ऐसे केसेस फाइल होते रहे हैं, और बट इसका जो है बेसिकली आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। सिरामिक्स इंडस्ट्री में देख रहे हैं अगर नेचुरल गैस के जो प्राइसेस है वो शार्पली इंक्रीज हो गए हैं 40% से, जो कि रिकॉर्ड हाई था फ्राइडे के हिसाब से। और इसके चलते जो ग्लोबल फॉर्मिंग अप जो एनर्जी प्राइसेस है 6.1 हो गया है MMBTU से बढ़कर 8.57 तक चला गया है। हीरो मोटोकॉर्प की बड़ी न्यूज है कि जो उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है वीडा V1 प्लस और वीडा V1 प्रो ने लॉन्च किया है 1.45 लाख के प्राइसिंग के साथ और 1.59 लाख प्राइसिंग के साथ। और इसकी रेंज देखा जाए तो 143 और 165 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली है। और कंपनी ने प्लान किया है कि इसे ये इंडिया के अलावा यूरोप, लैटिन अमेरिका, बांग्लादेश और जहाँ पे इनकी चेवीज है वहाँ पे भी इसे लॉन्च करेंगे। HUL एंड गोदरेज के लिए न्यूज है कि उन्होंने सोप के प्राइसेस कट की है 15% से, जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस सॉफ्टन हो चुका है इसके चलते। सो बेसिकली लाइफ और लक्स के अंदर ये कैटेगरीज में इनके 5 to 9% तक प्राइस कट हो चुके हैं, और गोदरेज नंबर 1 में 13 to 15% का प्राइस कट दिखा है। Technical and derivatives. So in the previous week, we saw that Nifty has seen some amount of buying and the index was up by 1.29%.
The trading range for the Nifty was within 16,800 and 17,400 level, whereas the Nifty closed at 17,300. In the last trading session of the week, there was a long unwinding, and this says there would be little bit of cautious on the higher side. Whereas if you see at the Bank Nifty traded within the range of 37,900 and 39,600, and the close was at 39,178. Even the Bank Nifty closed at 1.41%, which was slightly on the higher side. Specifically on the last trading session, from the derivatives point of view, the shorts were added in the Bank Nifty. Overall, what we looking at the weekly time frame, we believe that for the week there can be a range bound kind of move for the both Nifty and Bank Nifty. We expect the range for the Nifty within 17,500 on the higher side and 16,900 on the lower side. Whereas the range for the Bank Nifty is the 3,000 points, which is 40,000 on the higher side and 37,000 levels on the lower side. So more of a range kind of sideways market is expected for the Nifty and Bank Nifty, more into a stock specific action. Sector-wise, IT continues to remain strong. In a sense, we are looking for a bounce back trade in the IT. Specifically, Infosys and Wipro is something looking good on charts, followed by the pharma sectors like Dr. Reddy, Lupin, Pfizer, and Zydus Life, other few stocks which are looking positive on charts from the weekly time frame. On the negative front, it's not exactly the negative front, a little bit of profit booking. The Dabur and Godrej CP, which has seen some good amount of rally, might see some profit booking on the higher side. So, moving to another point, then a few private banks are something which are looking very positive. So Axis Bank, City Union Bank, and Federal Bank, this remains even the top our technical pick. So we believe that key corrections in this counter should be viewed to go long. Lastly, the mid cap counters has again started to perform. So few stocks in the mid cap counters are Siemens India, Deepak Nitrate, JSW Energy, Poonawalla, and Tata Chemical. And even Z Limited, to some extent, it is looking positive on the from the weekly time frame. So these are the counters which can be viewed to go long. Coming to the derivatives outlook, what we saw in the Friday session, there was a put writing was seen at 39,000 strike price and call writing at 39,500. Nifty futures has seen a long unwinding to the person of 0.2%, which is a reduction of 0.02 million shares, and the total outstanding position was close to 13.54 million shares. Coming to put call ratio, we saw a downtick in put call ratio at 0.97% as compared to its previous close of 1.06. So PCR has come down, and the major put options were additions of put options were seen in 17,000 strike price and 17,400, which was the highest built up to the tune of 43.3 million shares. Major call writing was observed at 17,500 and 17,800 strike price, which might act as a resistance. Coming to Bank Nifty, the total open interest stands at 21.25 lakh shares, again 21.25 lakh shares as compared to previous day close. This indicates the short build up in the Bank Nifty. Total long build up during the on the last session of the day was Delta Corp, Titan, Indiabulls Housing, whereas the short positions were seen in the Aarti, Hero Motoco, Ramco Cement. So overall, from the derivatives point of view, the strong support can be seen at 17,000 and resistance at 17,500. So we have more of a range bound kind of move for the market with the stock specific action. So that's all from the technical. Over to Vishal sir for more updates. Yeah, sorry. Good morning, sir. Good morning, team. So to start up with the PDF result preview that we published on Friday. Overall, the result season is starting today, and a couple of IT companies will report numbers. So then if I go sector-wise sector, the result preview that we published. So we are expecting mixed set of earnings in the upcoming quarterly season. But I mean, we are expecting more hits than misses.
Amongst the sector point of view, then auto, banks, and FMCG is expected to post better than estimated results, and wheel numbers is expected from metal and cement. On the positive side, we have seen that commodities prices, they have seen a weakness, and this will have a positive bearing on the margins once the companies start reporting number from Q3. Q2, I mean, numbers will be bad on the margins, but it looks like things are bottoming out, unless and until, like, probably we see any major sort of a deviation in terms of geopolitical side vis-a-vis the Russia and Ukraine, which has led to increase in the energy prices. So any such event, that's the only thing need to be watched. Sector by sector, if I go, then automobile, we expecting relatively better earnings compared to the previous quarter, and in this, the four-wheeler and the CV. They are these businesses will report a better numbers vis-a-vis two-wheelers. Within the auto space, we have a preference for M&M, SGS Enterprises in small cap, and Maruti. Next is on banking side. As per the company, a couple of companies, they have reported provisional data, and credit growth has remained robust. And even on a Y&Y and Q&Q basis, we have seen a strong set of numbers. From a sector point of view, we are expecting, like, in terms of margins, this will see an improvement. This is primarily led by there has been a rate hikes, and overall higher liquidity on the balance sheet observed during Q1 is expected to decline, and which will also support overall NIMs. In terms of our recommendation point of view, then we have a preference for ICICI Bank, and then in a small and mid cap, it's City Union, and then Federal Bank. Next is on cement. So cement, we are expecting, like, pretty weak set of numbers. The margins will see a decline. However, a couple of positive things which are coming is, like, imported the pet coke prices, they have seen a weakness, and then price hike in the month of September it has started, and only thing to be watched is, like, this continues, and around 3 to 4 months down the line, we have a budget, and historically we have seen a capex has been one major theme. So in order to play, cement is one sector which augurs well for it. We will be buying cement stocks in the weak Q2 numbers, because overall expectation is the numbers will be weak because margins will see a dip. But having said that, within the space, we find, like, Ultratech is the only best bet. Though Adani stocks, they are doing well, and in terms of news flow also, there is news flow going on, or probably they'll acquire GP assets also. But having said that, like, we find, like, the company Adani, they have acquired the asset by taking leverage, and then that makes us to stay away and then prefer probably Ultratech at this point of time. Next is on construction space. So we are expecting a pretty strong set of order inflow for the road construction companies, and the margins impact will be there. In terms of railway side, we are expecting revenue growth of double digit, and EBITDA margin will stay steady. Within the recommendation point of view, so within the road construction, we prefer HG Infratech, PNC Infratech, HG Infra and PNC Infratech. And then within the railway APC, we find RITES is one company which will report a good decent set of numbers, and overall valuation, they have stock have moved up, but still I think at 12-13 times is still cheap, because the comparison is being made, like, after we have seen a pretty strong set of multiple expansion for defense company, this will move to railway side. So RITES remain a best bet in this particular segment. Next is on metal mining. So companies will be reporting a weak set of number that is primarily led by the fall in the steel realization, and there is an impact of export duty. Overall, if you look at within the space, we still, have not have that much kind of preference, but all in all, if you look at Tata Steel is one company which is better amongst all. But still, I think there are a couple of regulatory overhang on this particular sector in terms of, like, whether you talk about the government capping the prices. So this sector performance will remain subdued. Next is on IT. So IT company will start reporting numbers in this quarter. The preview was discussed earlier. So we'll update more in terms of, like, how exactly the numbers will pan out. Overall, as one thing we have seen is, like, IT companies, they are entering the quarterly season with the pretty weak set of expectations. So any positive surprise that comes up in terms of their, like, the revenue growth guidance on margins, so that will keep stock performance from here on. Within the space, we prefer Infosys and LTI.
Next is on consumer retail. We are expecting FMCG to report growth of around 18% on YoY basis. This is better than the last 3-year average. Price hikes companies has taken, and so this will have a could have positive bearing, but I think that is the only element to be watched, because in our base case scenario, we are expecting gross margin to see in a contraction of around 190 basis points. Having said that, right now, the news flow which is coming in FMCG is because the input cost prices, they have seen a weakness. Companies are passing on the price hikes which they have taken. In terms of price cuts, now they are doing. So it looks like probably the margin impact which earlier they were expecting after a price hike, it is not there, and they are ready to pass it on. So this basically shows margins are bottoming out, and this bodes well for even FMCG company. Now next is on mid cap and small cap. So from this, couple of things to highlight out here. Mid cap companies under our coverage to report improvement in their top line growth, led by volume and price hike. Important to look is quantum of margin improvement on quarter-over-quarter basis. At commodity prices, they have seen a weakness. In terms of sector point of view, luggage companies where we have preference like VIP, Safari, or in hotel sector, Lemon Tree and Chalet, where we have preference, are likely to witness a strong improvement in sales and profitability, as particularly hotel tourism has seen an improvement. Overall, building materials is likely to report a pretty strong set of healthy sales. However, the margins will see an impact, and that is the only thing to be watched. Next is on, in auto side, just to conclude with, so Hero Moto has launched the first electric scooter on Friday. And if you look at a couple of specifications they have given, in terms of the two variants which they have launched, that will have a range of 143 and 165 odd kilometer. Company is also planning to enter international market, and where the company has a joint venture. Next is in terms of TVS. So TVS has also announced the launch of its electric vehicle, and it's called as TVS iQube electric scooter. Overall, they have given a couple of guidance in terms of in terms of the launch wise. They are trying to launch starting it which is starting from the Goa Goa facility, and the scooters have features such as touch screen, display, voice. Overall, I think if you look at companies are making this electric vehicle in terms of giving more feature which you have seen in mobile phones or maybe a TV, and it's actually moving to these two-wheeler sides. So that's all from my side, and I'll hand it over to Sir.